Hello everyone, I'm Nana Chabra with My IELTS Tutor. This is chapter 2 of Writing Task 2. In this chapter, we'll be talking about the rubric of Writing Task 2 or marking criteria in Writing Task 2. Now, why it is important to understand the marking criteria? I have seen students struggling in their writing task because they are actually not aware about how they are going to be marked. They are only focused on the limited area of writing. वो कुछ चीजों को लेके स्टक हो जाते हैं अपनी राइटिंग टास्क में और वो उन्हीं चीजों को अपना इम्प्रूव करते रहते हैं बट दे आर नॉट एक्चुअली अवेयर अबाउट हाउ एग्जामिनर विल मार्क देम. To get high score in writing task, you need to know what exactly examiner is looking for in your writing task too. So this is the reason we should be well aware about the rubric in our writing task. Once you are aware about the marking criteria, you can actually work on the implementation of techniques and skills which are needed in writing. तो हम अपनी writing को right direction में कर पाएंगे और अपने desired band score भी achieve कर पाएंगे. For example, if I do not know what are the ingredients required to bake a cake, how will I bake a cake? Similarly, writing में अगर हमें पता ही नहीं है examiner क्या क्या ingredients और क्या क्या चीजें he is looking for in a writing task, how will we able to provide it to him? How will we able to give it to him so that we can get high band score? Now, this is the reason we actually need to know about the marking criteria. Some of you might be knowing the criteria by names. बहुत सारे बच्चों को पता होता है by name ये criteria कौन से हैं. But what you actually need to do in these criteria is of utmost importance. How you need to perform in each of the criteria in complete essay. इसका मतलब आपका सारा essay जो होगा इन 4 criteria पे focused होना चाहिए. क्या हम उस अप्रोच से राइटिंग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं फिर भी हमारे बैंड्स नहीं आ रहे, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्राइटेरिया में कोई चीज गलत कर रहे हैं. So it is important to understand these criteria and we have to work at 8 or 9 band in each criteria. So let's understand what these criteria are. The first one is task response. The second one is coherence and cohesion. Third is lexical resource. And the final one, the fourth one is grammatical range and accuracy. Don't get confused by the names. We will be understanding each criteria in very simplified way. बहुत ही simple language में इसको समझेंगे आगे वाली videos में. But हमें ये criteria पता होने चाहिए और हर criteria का weightage 25% है. It means each criteria weighs 25%. It means each criteria has equal weightage. ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ vocabulary या सिर्फ grammar में काम करना है. इन 4 criteria की weightage equal है. तो हमें इक्वल इन 4 क्राइटेरियाज को इम्प्रूव करना होगा ताकि हम अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव कर लें. एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव ऑन ऑल दीज क्राइटेरियाज. वी विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ टू बूस्ट योर बैंड स्कोर, व्हाट मिस्टेक स्टूडेंट आर मेकिंग, व्हाई दे आर गेटिंग 5-6 बैंड इन देयर राइटिंग इन ईच क्राइटेरिया एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव इट टू दी 8 or 9 बैंड राइटिंग. And you should also know that कि हर criteria में आपको out of 9 bands मिलते हैं. Whether it's task 1 or whether it's task 2, you will be getting bands out of 9 in each criteria and overall task is calculated by dividing it by 4. So each criteria has equal weightage. I will be breaking down each criteria in very simplified way ताकि आपके लिए समझने में भी आसानी हो और उसको अप्लाई करने में भी आपके लिए easy हो जाए. Right? So don't worry, stay tuned with us. In the upcoming videos, we'll be talking about each criteria individually. Thank you.